mentorship round and the 2 evaluation round, and this is the final evaluation round that will be taking place. So I request all the teams whose name I will be announcing, be ready with your PPTs, the idea that you have to pitch and your project. In case if you have any doubt, we have the teachers and the coordinators, you may consult with them. Even we have the TechWorks volunteers over here, you may ask them. So now I would like to call upon team Deadline Mavericks. Team Deadline Mavericks. Is it present over here? Team Deadline Mavericks. Please report left side to the IT cell. Also the team AI Plant Doctors. AI Plant Doctors. Do we have the team AI Plant Doctors? Please report to the IT cell. And make sure you carry your laptops, your PPTs, or all the stuff that you need to pitch. I request the team AI Plant Doctors to please wait outside the IT cell, and the first team may enter for the final evaluation round. Once again, I'm repeating, team AI Plant Doctors, please be ready with your pitching criteria, PPTs and everything. And I request, please, it's a humble request that no team should leave the venue, because this judging criteria is based entirely impartially and based on your experience and how you pitched and how the mentors were there to assist you. So this is made by the mentors. In case you still have any doubt regarding the evaluation, we have the mentors, coordinators and TechWorks community. You may assist, you may have help from them. So please don't leave. You never know that the team name will be announced, and there will be only 3 calls for a particular team. Once again, I'm repeating, there will be only 3 calls for a particular team. हेलो हेलो
Everyone, may I have your attention, please? Judges, kindly note that there will also be a separate questionnaire round once their PPT and the idea of pitching is done. There will be having a questionnaire round in which you may ask the questions regarding their idea pitching, and it may last till minimum of 4 to 5 minutes. So each team, please be prepared. There will also be a questionnaire round once your idea of pitching is done. That will last minimum 4 to 5 minutes. Thank you. Hello. 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 Guys, what's your team ID? Sir, our team name is Deadline Mavericks and our team ID is 142. Good morning, all respected judges present here. So our team ID is Molly, 142. and our topic is agrotech smartex. So first we will explain our problem statement, then we will explain what the solution provided by us and the other essential features upcoming needed in this. सर बेसिकली हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि जो मेन चीज़ होती है कि जैसे रिसोर्स एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे फार्मर्स को मेजर इशू ये फेस करने पड़ते हैं कि हाई कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर्स होते हैं, जो उनको कई फार्मर्स होते हैं जो नहीं असेस कर सकते ट्रैक्टर्स को, लाइक जो गरीब फार्मर्स होते हैं उनको रेंट पे लेने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। और इसमें एक और फीचर है कि अनयूज्ड और अनयूटिलाइज्ड एग्रीकल्चर लैंड, कई फार्मर्स के पास बंजर लैंड होती है जो फार्मिंग नहीं कर सकते पर लैंड खाली पड़ी रहती है, तो वो हम प्लेटफॉर्म पे लैंड डाल सकते हैं लीज पर देने के लिए ताकि वो कोई यूज़ में आ सके, लैंड ख़राब ना जाए। और नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी फाइंडिंग रिलायबल लेबर ड्यूरिंग पीक सीजन, इसमें एक और फीचर्स है लेबर्स के लिए। जैसे हम एज अ रोल लॉगिन करेंगे, एज अ लेबर लॉगिन करेंगे कि हम अपनी पोस्ट डाल सकते हैं कि मैं लेबर हूँ, मैं ये काम में एक्सपर्ट हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, ताकि जो जिसको भी नीड है लेबर की वो अपना रिक्वेस्ट डाल सके ताकि मैं जो लेबर है वो आगे हायर हो सके। जैसे कि मनदीप ने बताया भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसमें कैसे किसान भेज सकते हैं, कैसे आईडी डाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कई टाइम ये होता है भी किसान अनेबल है रिक्वेस्ट डालने के लिए, तो उसके लिए हमने 2-3 फीचर ऐड किए हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, जिसमें किसान वॉइस असिस्टेंट के थ्रू रिक्वेस्ट डाल सकता है अपनी क्रॉप को सेल करने के लिए। इफ़ उसे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है तो इक्विपमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकता है। देयर आर मैनी मोर फीचर एक्सप्लेन्ड बाय मनदीप। Good morning, sir. As my team members has explained many features, I want to explain one more feature. Like whenever we harvest a like farmer harvest a crop, so basically what happened is like they have to uh, reach for the selling the crops, and then the main issue is like they didn't get the exact price that they want. So what we are changing in this, like the farmer can upload their crop, the harvested crop on the app, so that uh, a fixed price, like if I am a farmer, I want to put on my potatoes, like I have 1 kg of potato, and I specified the price like 10 kgs, sorry, 10 rupees per kg. So that request will be forwarded to all the buyers, and then they can access my request. If they want to buy, then they can forward a request to me, so that I can see like whoever or whosoever buyers are interested in buying my potatoes. A further feature will be explained by team members.
Now the other feature like Dicastra, we have used Dicastra algorithm for minimum cost optimization, as we have added 2 to 3 schemas where we have to find minimum cost optimization in this. Like when a farmer want to sell or want to rent something, then he will have to use the Dicastra algorithm in a backend, and that is managed by Mandeep. Which algorithm you said Dicastra. again? Dicastra. Now I am going to explain my project. First, there are 5 portals. Show portals. Like we have seen that how a farmer can enter request, like all items are there. There are 5 categories like equipment, land, labor and limestone. There are 5 types of portals like a farmer portal, a buyer portal, a rental portal, and the other features we can see that. Like we have login buyer portal in which a buyer can see the request, accept request, like we have seen in OLX. If we have a buyer and a seller, then he can deal by themselves. And same as in this portal, we have seen that a buyer and a seller that can do chat on this portal. Now we start. There are 5 portals like I have already tell you: farmer portal, labor portal, assist owner, dealer and seller and buyer. Like this is our dashboard. There are 5 options how a buyer can post a request to sell their products, how a seller can accept that request, and which algorithm is used to accept that request. There are, I have already tell you, Dicastra algorithm is used to accept that request, and we have to enter some criteria to deploy. Like Daljinder has 4 requests, and what he want to do on that website, then he can buy a tractor at 5 lakh 50,000 rupee and agriculture crop, and later on the whole project will be explained by Mandeep. Sir, basically, the platform you have already listened that कि प्रोजेक्ट जो हमारा है कि ये सबसे पहले तो हम 5 रोल्स दिखाए थे आपको, एक एसेट ओनर होगा, फार्मर होगा, लेबर होगा और बायर होगा, और एक हेल्प सपोर्ट का बटन डाला हमने जो एक वॉइस असिस्टेंट के नाम पे होगा। एडवांसमेंट में ये है कि वॉइस असिस्टेंट में हम ये डाल सकते हैं कि जो जो फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो स्मार्टफोन की जगह एक फ़ोन कॉल नंबर हम अलॉट करेंगे। वो अभी हमने ऑन नहीं किया है क्योंकि वो कुछ काफ़ी प्रीमियम मांग रहा था। ट्विलियो पर हम उसको यूज़ करेंगे जिसमें फार्मर जो है वो कॉल करेगा, अपने डाउट्स पूछेगा, और उस साइड हमारी साइड से फिर एक बंदा जो अलॉट होगा वो उसको कॉल करेगा, ताकि जो फार्मर्स के डाउट्स हैं और अगर उसने कुछ पोस्टिंग करवानी है तो वो भी हम कर सकते हैं अपनी साइड से, ताकि क्योंकि फार्मर के पास तो कोई नॉलेज नहीं है इस बात की, वो कर नहीं सकता। और ये हमने वॉइस असिस्टेंट अभी टेम्परेरीली बनाया ताकि जो पढ़े लिखे भी हैं उनको अगर कुछ डाउट है तो वो कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने वॉइस असिस्टेंट डाला है, अगर वॉइस असिस्टेंट दबाएंगे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमने 3 लैंग्वेज अभी सेट किया है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। तो उसमें कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, उसमें हम अपनी कमांड देंगे कोई क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन का आंसर हमें हमारे पास आ जाएगा। Hello, check. Is this piece working? Hello? Might be the mic is not working. Okay, now we'll speak. Is this piece working? Yes sir. Okay. Showcase the demo, please. Yes. इसका डेमो करो हिंदी में, हिंदी में।
Okay, sir. हिंदी में, या Hindi demo. Sir, can we come to you so that it can be easy for us also? not a problem, you can. Yes. Sir, because control is there and I am speaking here, so it is not collaboration is not. Okay, okay, I Yes, hear yes. you. Team and judges, it's a request. Can you please use your mics? No, no, Gemini 5 point तो अभी आया नहीं दोस्त. Gemini अभी 3.1 चल रहा है. नहीं, इन्होंने AI नहीं यूज़ किया है, इन्होंने क्लाउड ट्रांसलेशन APIs यूज़ करी हैं. आपने ट्रांसलेशन APIs यूज़ करी हैं, करेक्ट? I repeat, team and judges, please use your mics for the answers as well as the questions. So we are trying to look at the demo currently. सर ये जैसे कि पर्टिकुलर एक फीचर हमने ना अलग अलग डिप्लॉय किए, बाद में हमें इशू ना आए. वैसे तो सारे पर्टिकुलर फीचर्स अलग अलग तो जो हमने एक दूसरे को किए आइडियाज़ आए तो बाद में डिप्लॉय किए, अलग डिप्लॉय किए. But sir have to control. मैं हिंदी में आपको भाई भाई मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा. मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा. हिंदी बोलिए. कोई बात नहीं. There is a lot you can have improvements. You can continue with your presentation, not a problem. It's answering in English otherwise also, right? That I understood. ठीक है. I got you. Okay, no worries. सर ये हमने चैट सेक्शन डाला
What is the time limit? Actually, there is no time limit, but till the end, there will be an issue for the other teams. Okay. Dear judges, since there is no time limit, but if you want, then we can set a particular time limit, then they can adjust accordingly if you Yeah, want we it. have to. We have to. Okay, one thing I want to ask, why you are using Python in backend? I assume it is slow. Which algorithm you are used in model? Yes, sir. Best efforts. ठीक है, good. So there is an event in Nagpur which is Agro Vision. Okay, आप लोग उसमें participate करना जाके. Agro Vision में it's like Nitin Gadkari would be participating directly, and if the idea actually clicks, they will fund. So you need to work a lot on this before that. All the best. अभी ना स्कैटर्ड वे में सब फीचर्स पे फोकस मत करो, ट्राई टू सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, है ना? ओके, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट. आई थिंक वी आर डन.
Solve one problem at a time. Okay, let's move to the next team. Thank you so much. Excuse me, guys. May I still reconfirm your team name, please? Ex- So now, dear judges, kindly note that the AI plant doctors need some more time because of the technical issue. So we will proceed further. And the team name, Azrian. Team name, Azrian. With mentor name, Mr. Keshav. Team name, Azrian. Is it present over here? I'm just spelling it. Maybe it can be a pronunciation problem. It goes like Asrion. Team Adrian. Is it over here? Moving ahead, Team Sher Coders. Is it over here? Please come forward and report on the left side of the IT cell. And dear judges, there is a time limit, and once again I'm repeating to everyone, in total you will have 10 minutes, 7 minutes of pitching and 3 minutes of questionnaire round by the judges. 7 minutes of idea pitching and 3 minutes of questionnaire round, in total 10 minutes. Exceeding the time limit of your idea pitching may lead to decrement in your marks. Next, Team Code Mafia. Do we have Team Code Mafia? Please be ready and report to the IT cell. You will have the next turn. आपको प्रेजेंट करना है ना तो आप जाओ स्टेज से स्टार्ट करोगे यहाँ कैसे स्टार्ट करोगे आप यहाँ तो आपका टीम का आपका कौन जाएगा
Every day, thousands of people consume fake medicines, and we are here to deal with this cause. A very charming morning to everyone. This is Sher Coders, and we are here to present the topic fake medicine detection and verification. Our topic is fake medicine detection and verification. And just take an example, that medicines are made for saving lives. And if they are coming in a wrong way, or the fake medicine that we are consuming, that would be wrong, right? So in a solution to that, our problem statement was that the medicines are coming fake from the back. The companies are making the right thing, but we are getting the wrong, because there has been a bleach when the medicines are coming to us. We don't know that we are getting the right thing or not. As to get that, we are making a product that is Medify. It would be our objective that the customer is getting the right thing, the authentic thing that the company is making. So to make it better, to link the company with the user, we are the intermediate between them, so that we could provide the authenticity of the company to the user. Now we will talk about why we are using Medify. Medi we are using Medify because there are multiple companies that are using fake medicines to counterfeit that medicines. We are using this Medify. Medify will help us to ensure that the medicine we are using is dangerous or not. Next is the supply chain. When the product is delivered from the company side to consumer side, then in between the products are changed. So to overcome that thing, we are using a QR code, authentication system, so that we can manage. Now the consumer needs the instant check. The consumer can get the instant check by scanning that QR code, and it will be getting in 3 trail. The 3 trails are known as the trail mapping. So the software requirements are front-end, back-end database, and the vision control that we are getting through React.js, Node, and MongoDB. Basically, the Medify app is just getting you to know that the user and the company is linking in between. So we have taken a centralized database through MongoDB. It will provide the database from the company, and then from front end and back end, we would know that our product is verified as good, fake, or authenticized. Now we will talk about the preliminary designs. So the system is divided into 4 main categories. First is the front end.
In front end, we are using the user interactivity. We are using software. We are using libraries like React uh, and we display the results and map here. The second one is the backend server. Here we process the requests and we interact with the databases. Next one is the database. Here we store the medicinal details of the product. The fourth one is the map integration. Here we do the trail mapping, store the trail mapping from where the journey of the product began and where it is going. So the proposed solution is Medify. It provides a smart verification system where it integrates scanning, backend validation, and AI analysis inside it. So how it works? Basically, each medicine has a scanned QR inside it. So the user will scan this QR code. User scans the QR code using the system. Then the system retrieves the data and it will know about the data, product details, the product UID, etc. And then AI analysis patterns like local inconsistencies and the time anomalies. Now, the output, if the product is authentic, then there is no need to get into suspicions. So it will be safe to use. If the product is suspicious, we need to be cautious and we need to get another step, that is trail mapping, to use the trail mapping. If the product came out to be fake after residing upon the trail mapping, then we don't need to use it because it is genuinely fake. We are getting the benefits from the our app Medify. Basically, the first thing that we do in this app is we are starting from the company, right? The cartons are packed, and in the cartons there are many products. Those products are linked to the main carton package, the QR that we are on it, and our app would be saving that data from the carton package of the QR to just let us know that the products are in that carton are linked to that QR. So going ahead in the trial mapping, the other roles that are playing, that receiver and then a retailer, every person has to scan that QR to add the information in our app so that we could get to know that the trial mapping that we are using, it would tell us that the product that is coming from the company, is it really authentic or fake, so that we would know that the app is coming from the company, is going through the similar steps to come to the user. So the benefits that many people don't know about, that company and user are getting most of the benefits, because company doesn't know, most of the times user sends feedback of the fake medicines that your medicine is not right, and then after that companies also face a too much loss, and users also know that they are getting fake products, and also they are giving a false feedback to the company. So it would benefit all of those consumers, pharmacies, manufacturers, even hospitals that are getting the medicines on the basis of companies. Next. Now the key features of Medify include several advanced features. In this with the features we are using is QR scanning, that is two-factor authentication, and then the geolocation, and in geolocation we are tracking the we are using timestamp, in which we are using time and the place from where the parcel is delivered, and when the parcel is moving from the company to the delivery, then it is going to the consumer. So the whole process, in the whole process we are seeing the time, and if there is any time gap, then it will be again sent to the company so that they can check and verify. Now the real time example is, for example, in recent, Himalaya is one of the Ayurvedic company. So what happened was, when the products were delivered, some
a group of people, they were like mixing their stuff and they were using the same logo and the trademark and they were selling on the name of Himalaya. So to overcome this problem, we are mainly we are targeting the companies. Mainly we are targeting the companies so that they can build the trust between the consumer and their companies. Now we are getting that all information, and the conclusion is that this app has been made before, but with a simple loophole that there wasn't any tracking of the system that where it is coming from, and all the locations and timings that it has been shipped to. That the trail is going on from the company to shipment to retailer and then to the customer. To cover all that, firstly, the before it was made like the website, that the authentication was there, like the nested loop, the cartons boxes QR, and then the product ones. But now we have added geolocation, as my teammate told you. In that, each time the QR is scanned, only once it could be scanned, first of all, and then after it is scanned, it is taking the location, time, and all the information that it has been scanned on. And then we came to the user, and the second time when authentication is done, so that the user could know that the medication that it has been using is fake or the authentic user from the company. Thank you. So the Medify app that we are showing you right now, the main platform is showing to you. In it, verification that we will sending to you from the scan and verify option. Scan and verify. It would be covering your live track checkups that the product is coming from the company, and it would check from the database that the all the data that has been stored by scanning the QR, and then it would get us the verification from the app that track all the movements, so that we would get to know and verify that the gap analysis and integrity of our product is safe. Also, the chain of custody route is taken each time the QR is scanned. It would tell us that the manufacturer was there at this location and time, and then to another, then to the pharmaceutical company or the retailer that would be giving us the medicine. How you are getting this geolocation data? Sir, the barcode is scanned to the carton or the product, and then only we can get the information of the location and the time. I'm not getting again. Sorry. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, how you are getting geolocation data? Sir, each time we are scanning the QR code from the barcode scanner and the QR, there is a system fitted in them so that we could get the location and time, and that time and location will be stored into our website or app so that we could track the time and location. So you are saying you will scan this QR at each moment? No, at each moment, at like the shipment, before shipment, it is scanned so that we would get to know the time of the shipment that is going on. And after shipment, the next time it would get placed into a place so that it would be get shipped to the next person. At that time, it should be scanned so that we would get, the company would get to know that the product is going from this place to this place, so that the authenticity of the product is safe with the company. Will they allow you to take the data, and why they would take you their data? Like No, why they trust you? we are not taking their data. Their data will be stored in their only centralized database, and then our app is only used to verify it
from the location, the geolocations that the barcode will be providing, so that the user could get the authenticity of the product. Any other What's questions? the data source? How, sir? Where the data is coming? So Sir, the basically, data. for now, we are taking a Actually, mock-up actually, data. right now it is not feasible to connect every product without the data source. Sir, the data is stored in the database of the company, the location and the time. Then But why our company is uh, given a database access to you? So actually, for now, it's just a mock-up for the given data set. We have taken a synthetic data set, but the real data set is very confidential. So the company will not provide for us now. That's why right now it is not feasible product. So it's sir, not feasible right now, but it can be a great product in And the future scope. At least you have something so they can trust you. Sir, You have many some. companies are facing the problem of the fake medicine and they are getting in so much loss. So, One question, okay? So the medicine are having multiple multiple packets, right? So are you going to implement that scanner code on every single leaf of it, every that single thing, leaf? yes, sir, that thing I was going to explain, that the cartons that are there, and in cartons there are many products like one, two, three, like you're telling us, right? Yes. So main QR will be on the box on the carton and it will be sealed. So the one QR that is on the box will be linked to the other products on the serial number that they are having already. So that QR will be linked to the barcode on the products, so that the authenticity of the carton is safe, so that when it goes to the shipment or to user, we would know the user when it scans that, to let the company know that it is really true or not. Then the shipment will be, it will be very strict. It is like, let's say I am having inventory, then I have to define every single carton where it has to go. My labor cannot simply, okay, I need 10 cartons of this product, you simply take it and ship it. It will not happen, because every single carton has to be binding to a particular location only, otherwise it will be an anomaly. It would break an anomaly, but the company knows that our shipment is It going to will be make there. the inventory management much harder. But sir, the company knows that where the shipment is going to be, but the only thing that they See, need to add. they know the stock, not every single piece or every single carton going which particular location. They know, okay, 10 cartons of this are going to this location. They don't Then know which 10 are going to this location, right? That is one. Second, still even in the carton you cannot define which particular medicine. Rather, you could have done this like companies data source, like they can have a hash on it, right? And you have the secondary key, public key, which we call as, right? It is as similar as you can sign any JWT token, right? And you own the responsibility to decode that token. Company allows you to decode that token and you simply verify it. It would have been simpler to see the authenticity, because signature cannot be varying from one company to another company, right? It will always be staying with one company only, because their sir, salt will be different. I get your question. That was a really nice question, but when the trailing is going on, it is only used that because there are many problems, like the QR is also faked. The serial number and all are also faked. So to provide that, so to countercome QR that, code can be generated. So the way you have explained, this QR code can be generated by anyone, right? It is merely a piece of information, can be created as a QR. it can be scanned only one. But when it's going ahead, it is scanned only once at a particular location, so that it wouldn't get anywhere else. Okay, no worries. Thank you. What's your team ID? What's up? Team 109. ID.
Mic. Moving ahead, this is the call to Code Mafia. Team Code Mafia, please come forward for your presentation, and may I please have the confirmation from Team AI Plant Doctors. AI Plant Doctors. Do we have Team AI Plant Doctors? Are you ready? So after Team Code Mafia, you will be having your presentation. Are you done? एक्सक्यूज मी उनका ना एक टेक्निकल इशू आ रहा था तो अभी सॉल्व हुआ है सो कैन दे जस्ट ठीक है आप लोग कर लो ठीक है एंड एक बात का ध्यान रखना प्लीज ना सेंटर में होकर बोलो ठीक है डन और एक सेफर साइड यहाँ पे खड़ा हो जाओ इन केस अगर माइक ना चला तो यू कैन जस्ट हाइड एकदम से नीचे जाओगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा दैट वी हैव अ डेमो दैट वी नीड टू शो दैट आप नीचे जाके उनके पास Hello, mic check one. Good morning, everybody. I am Ranveer Singh from Team Code Mafia. The problem we are trying to solve is making fitness tracking and health tracking affordable. Most people think that they need additional devices like stopwatches or fitness trackers to track their fitness level and their workouts. When they are not able to buy these additional devices, they go for free services like Google Fit. Google Fit is a good service, but it only tracks like very basic parameters like steps and move minutes. What we are trying to do is use hardware available to the user to track their workout in real time using their camera from their mobile phone or maybe a webcam from their laptop. We will try to judge their form of their workout, intensity of their workout, total sets they do, the total time they work out, and the total mood swing they have before and after the workout. Next. Now, judges, I'll explain what the problem statement is. Our problem statement was affordable health tracking and fitness monitoring systems. We came up with three major causes why current fitness monitoring systems lack and aren't affordable to the normal users. Firstly, sir, normal fitness monitoring systems, they rely on accessories like Fitbits and wearables. And if you need external help or any sort of guidance, you need to hire fitness trainers, and they're quite expensive. If you want the best guidance, the top gyms can charge you thousands of dollars. And if you go with the software option, the existing softwares and apps only track your steps and calories. They determine your health score based on these only. Our solution is Zenith Health. It's a AI plus computer vision web-based platform. Firstly, we are using computer vision to detect the subject's posture, and we are giving a real-time feedback to the user that their posture is wrong, how they can improve it, and the number of reps they're doing, and the speed of their workout is also calculated. We are giving health analytic dashboards based on weekly data, and they need no external variables, no Fitbits. It's just your computer's camera or your iPhone's camera or any phone's camera. Some of our key features are firstly a workout scanner. It's using computer vision to check your posture in real time. Then it's checking a user's form and accuracy based on the coordinate system of user's body parts.
Then the emotional detection system, it will check if the user is stressed out during workouts and it will collect data. Our system does not store any video footage, sir. It's privacy first, so it will only score the average scores calculated based on the data. Then it's a AI-based health recommendation system. The models we are using are AI models, sir. First is a MediaPipe model, then is a fast API.js model. MediaPipe will first calculate users' coordinates and check users' form and posture during a workout. And then a fast API will judge users' emotions and their emotional state and how stressed they are during workouts. Based on this, we'll create weekly recommendations. We'll refer them to mentors or doctors if they need any external help. We have a dashboard for that. And then there's also analytics dashboard which will summarize the user's weekly data or monthly data. I'll explain the workflow of our website. Firstly, the user will log on into our website. Then they can sign in if they already have account or sign up if they don't have account. Nextly, when they open the website, go past the landing page, they'll have a dashboard with multiple options on the navbar. Firstly is the AI processing layer. It will have the workout option where we are judging a user's form and posture. Then there's the emotional bar which will judge user's mood and stress and detect their facial expressions. We can detect up to 6 type of emotions with 95% accuracy currently. Then there's the processing analytics layer. It works on the back end, but we can show the data and graphs on the front end based on the user's weekly, daily and monthly output. Then we also calculate a health score, which is based on how the user's form is, how their mood is, and how consistent they are during their workouts, how many reps they do. Then we have a recommendation engine, which will give personalized suggestions to the user based on the exercise form. If they want to correct their form or go up to any new form of exercise, or they want to increase their workload during each workout. Finally, everything is displayed correctly on the output layer, which is our front-end UI. Now I'll pass on to my colleague for innovation and uniqueness of our project. So judges, I will now talk about the uniqueness and innovation of our app and website. तो फिर हमारी ऐप जो वेबसाइट है वो बाकी वेबसाइट से डिफरेंट कैसे है, जो क्योंकि इतने सारे हेल्थ ट्रैकिंग और फिटनेस ट्रैकिंग वेबसाइट्स हैं या वियरेबल वॉचेस हैं जो कि पहले से ही ये सब चीज़ें ट्रैक कर रही हैं। तो भी हमारी वेबसाइट में ऐसा क्या यूनिक है कि यूज़र्स उसमें आएंगे और हमारी वेबसाइट में इन्वेस्ट करेंगे या इसे यूज़ करेंगे। तो फिर हमारी वेबसाइट जो है, एक तो प्राइवेसी फर्स्ट है कि भाई कि जब हम कोई भी ऐसे ट्रैक कर रहे हैं फिटनेस, तो फिर हम लाइव फीड ले रहे हैं उनकी, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, कोई भी बैकएंड में वीडियो स्टोर नहीं हो रही है। जबकि जो पहले से ही प्री बिल्ट वेबसाइट्स हैं ऐसे ही सिमिलर, जैसे कि जिम फिट होगी या जिम एआई होगी, वो उसमें हम पहले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ऐप में डालते हैं, और वो ऐप हमें फिर उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देता है कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं या हमारा क्या स्कोर है या हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं पोस्चर वगैरह में। कैन यू शो अस द वर्किंग पार्ट? वर्किंग सर हम बाद में दिखाएंगे, नीचे अभी नीचे आना पड़ेगा। हम ऊपर से सर वो नहीं होगा ना, वेबकैम असेस नहीं होगा ऐसे सर, बिकॉज इट्स वेबकैम बेस्ड, तो हमें जजेस को नियर बाय क्लोज आके दिखाना पड़ेगा। कैन वी गो देयर एंड सर, कैन द एंटायर टीम कम सर? थैंक यू सर।
team AI plant doctors, you can set your mics. And team Agrian, be ready for the next turn. Team AI plant doctors, get ready. It's your turn now, and the another team, Agrian, the another turn is yours. So now it's turn for AI plant doctors. You can present. Come forward, you can present your presentation. Other team members, please take your seats. Now it's turn for the AI plant doctors.
प्लान का मतलब ऐप शो I would like to repeat the time limits. The total presentation is about 10 minutes, in which 7 minutes is for the pitching and 3 minutes are for the questionnaire round. Please stick to the time limit so that each team will get the proper time for their presentation. Okay, AI plant doctors, you can start. Good morning, guys, and good morning, sir. So, firstly, I am Samirul Huda, and I would like to introduce my team. So, this is my teammates Pandey and Varshita, and this is Anchal. So, basically, we have made an app called Plant AI Doctor. Before we start everything, we have to show you some data of like authenticity from the news and from other stuff. Okay. So, Varshita, so, sir, may I show the data? Uh, yes, sir. What's your team name? Sir, my team name is AI Plant Doctor, and the code is 102. Base. So, can I start, sir? Yes, sir. I said, can I start, sir? Start. So basically हमने एक ऐप बनाया जो कि like wholly like farmers के लिए स्पेशली एंड हम like मैं बताना चाहता हूँ like आज से like 12 दिन पहले मुझे ये टॉपिक अलॉट हुआ था. So इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द इंटरनेट डेटा हम लोगों ने गांव में विजिट किया एंड काफ़ी सारे फार्मर्स से मिले जो कि शाहपुर वाले कैंपस में कैंपस के साथ काफ़ी फार्मर्स लोग रहते हैं. इवन वहाँ पे विलेजेस है एंड काफ़ी कुछ है. तो मैं शो करना चाहता हूँ कि मैं फार्मर के पास गया था उनके रिव्यू के लिए, उनके क्या क्या लाइक नीड्स हो सकते हैं एक ऐप में, क्या क्या ज़रूरत हो चुकी है. तो मैं एंड मेरी टीम्स गई थी वहाँ लोकल एरियाज़ में जो कि शाहपुर के कैंपस के बाहर में जो भी मतलब विलेजेस हैं वहाँ पे काफ़ी फार्मिंग होती है. तो वहाँ पे काफ़ी कुछ लोग उन्होंने बताया क्या क्या चीज़ की नीड होती है. मैं जानता हूँ मैं फार्मर नहीं हूँ बट आई बिलीव दैट कि अगर मैं किसी फार्मर से सजेशन लूँ तो मुझे एक अच्छा ऐप की रिकमेंडेशन दे सकती है उसमें क्या क्या होना चाहिए. तो बेसिकली मैं ऐप को जो भी डिटेल्स है हम सब ने मिलकर बनाया. तो मैं नहीं चाहता हर चीज़ में खुद से बताऊँ, कुछ चीज़ें मैं अपने टीममेट्स को भी शेयर करना चाहता हूँ. तो आयुष पांडे अभी आपको सब चीज़ बताने की कोशिश करेगा. सर AI plant doctor. Yes sir, 102. सर बेसिकली सर पहले मैं एक डाटा शो करना चाहूँगा. सर जैसे कि आपको डाटा मिला हुआ है कि किसान जो है वो 70% किसान फ़ोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं. और अभी करंट में रेन हुआ था, लाइक एसिड रेन हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था. एंड एक एंथोर्पी का डाटा है जो कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था, लाइक कि वो डाटा सर पहले लाइक कि एग्रीकल्चर में AI का बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है. बिल्कुल वो जो ग्राफ है वो AI में मतलब एग्रीकल्चर में है ही नहीं. तो मैं चाहता हूं कि मैं एग्रीकल्चर में डेवलप करूं, AI को लाऊं जिससे हमारे जो हमारे किसान है, क्योंकि 100 साल बाद भी हमें खाने की ज़रूरत है तो किसान की ज़रूरत है. तो सर बेसिकली एक एग्जांपल है कि पेन किलर का मार्केट बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू विटामिन गोली, कि विटामिन गोली हम लोग नहीं लेते लेकिन सब कोई जो बैठा हुआ है वो पेन किलर का मेडिसिन जरूर लेता है. तो सर इसीलिए हम दर्द को सॉल्व करने आए हैं. लाइक जो किसान का दर्द दुख है उनसे हमने बात किया, उनके ग्राउंड लेवल पे गया, उनसे बात किया एंड देन हम लोग ने सोचा एंड इंप्लीमेंट किया. सर इंट्रोड्यूस AI प्लांट डॉक्टर. सर फार्मर आर लूजिंग क्रॉप्स ड्यू टू लैक ऑफ राइट गाइडेंस. लाइक वो अपनी मेहनत से नहीं हारते, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने फसल के लिए, अपने खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो अपने गाइडेंस की वजह से हार जाते हैं. वो गाइडेंस लेने जाते हैं, उनको गाइडेंस सही नहीं मिल पाती है, उनको सजेशन सही नहीं मिल पाते हैं. जैसे कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे गए तो हम लोग को मालूम चला कि वो सजेशन लेने किसी मतलब अपने गेस वर्क पे काम करते हैं. लाइक उनको कोई सजेशन देने वाला नहीं है. अगर उनका गेस वर्क खराब हुआ तो साल भर का उनका फसल खराब हो गया. 25% क्रॉप हर साल
साल लॉस हो रहे हैं, 100 मिलियन पीपल्स जो है फार्मर्स जो है विदाउट एक्सपोर्ट एक्सिस हैं। ये चीज़ें हो रही हैं नो एक्सपर्ट एक्सिस के वजह से, रॉन्ग फार्मिंग डिसीजन की वजह से, क्रॉप फेलियर की वजह से और नो रियल टाइम। सर लाइक हम लोग बस केवल क्रॉप्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सॉइल के बारे में भी सोच रहे हैं कि लाइक कि मिट्टी जो है वो मतलब जो क्रॉप्स है, जो फसल है वो मिट्टी पे ही होगा, तो अगर मिट्टी अच्छी रहेगी तो फसल भी उतनी अच्छी होगी। सर हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं जहां पे एवरी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी की जो उनको प्रोवाइड है, जो जो वो हमसे मांगे, जो जो उनको चाहिए था, हमने वो सारी चीजें अपनी ऐप पे दी हैं उनको। सर प्लांट डॉक्टर वर्क कैसे करता है? अब लाइक बस नॉर्मल कैप्चर करना है, एआई एनालाइज करेगा, रिजल्ट डिस्प्ले करेगा और सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये नेटिव लैंग्वेज में भी देगा, लाइक पंजाबी, हिंदी, मराठी, जिस लैंग्वेज में चाहिए वो सारे लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। देन हमने टेक्नोलॉजी में यूज़ किया है 3 मेनली पार्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड AI/ML। फ्रंट एंड में फर्स्ट हमने नेक्स्ट JS यूज़ किया है, जिसकी हेल्प से हम UI को रिस्पॉन्सिव और रिएक्ट से हमने का यूज़ किया है। देन हमने जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया, जावास्क्रिप्ट से जैसे लॉजिक हैंडल करता है। देन हमने टेलविन CSS का यूज़ किया। टेलविन CSS का यूज़ हम इसने इसलिए किया है क्योंकि वो स्टाइलिंग करने में ईजी होता है, उसकी हेल्प से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। एंड देन हमने फ्रेमर मोशन, हाँ जी, फ्रेम फ्रंट एंड के बाद ओके। सर मार्केट अपॉर्चुनिटी देखते हैं। सर 20 मिलियन ग्लोबल मार्केट है, 8 बिलियन साउथ एशिया अपॉर्चुनिटी है, 1 बिलियन से ज़्यादा इंडियन अपॉर्चुनिटी है और 100 मिलियन फार्मर जो है विदाउट एनी गाइडेंस है, तो इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सर हमारे प्लांट डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद इम्पैक्ट क्या आएगा? इंक्रीज होगा यील्ड, कॉस्ट रिड्यूस होगा, एक्यूरेसी रेट मिलेगा। यस सर, यस सर, यस सर। सर पीपीटी रहने दे, मॉडल दिखा। ओके सर। Use your mics. Take your mics along with you.
वर्क किया लाइक एक मार्केटिंग हाँ इसकी पाई एन की फाइल के साथ मैं आइडियाज के लिए बाहर गया था एंड सोच रहा हूँ मैं फ्रंट एंड पे वर्क किया तो सारे मतलब टीम मेंबर्स एक साथ मिलके सारे पे काम सिर्फ एक पर्सन चीज़ नहीं किया, सबने मिलजुल के किया। कमांड वी करके या कंट्रोल पी करके निकालो सीधे पी बाई एन पी करके कोई तो फाइल होगी। उन्होंने जो दिया था एक कागज दिया था व्हाट इज इट रेफरेंस ये सर डेटा है क्योंकि बहुत सारे टीम मेंबर्स लाइक देखो तुमने यूएसपी पे ही कुछ मतलब बता नहीं पा रहे हो यार, यही यूएसपी थी इसकी सारी। So now I will be announcing top 15 teams of Codecrafter Hackathon 3.0. Team Deadline Mavericks, team ID 142. Team AI Plant Doctors, ID is 102. Team Agrian, ID 170. Team Sher Coders, ID 109. Team Code Mafia, ID is 123. Team Veda, ID 211. Team Fethier, ID is 161. Team Fignicious, ID is 233. Team Hamtech, ID is 145. Team Debunk Coders, ID is 171. Team Defense Squad, ID is 165. Team Pioneers, ID is 247. Team AI Rebels, ID is 234. Team Gentle Warriors, ID is 141. Team Hack Wars, ID is 231. These are the top 15 teams which are being selected in the Code Crafters 3.0. Can we have a huge round of applause right here for them?
all the teams, I request, make sure that those teams who are leaving the venue, please make sure that you have received your certification of participation. You have received your certificates of participation. Please assure that. And then you can leave the venue. Once again, I'm repeating all the teams. Firstly, in open innovation, we have the Bunk Coders, Defense Squad, Team Pioneers, AI Rebels, Gentle Warriors, and Hackers. Moving on, we have Team Hemtech, Team Fingineers, Team PTAH Eve, Team Veda, Team Code Mafia, which is already done as the judges have marked their results, and Sher Coders, which is also done, and Team AI Plant Doctors, along with Team Agrion, and Team Deadline Mavericks, which was the first ideation pitching. Now, I request all the teams to please hurry up as we are running very short of time period. We will have a award felicitation ceremony as well. So I request all the teams to please hurry up, and you will have only 4 to 5 minutes for your idea pitching. Now it's time for Team Agrion. You can start pitching. Good morning, everyone. Team Sher Coders, get ready. Good morning, everyone. So ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਓਵਰਯੂਜ਼। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਸਪਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਥਰੂ ਹੈਂਡਲਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਰੋਨਸ ਵੀ ਉਹੀ ਰੈਂਡਮ ਸਪਰੇਇੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ ਆਡੀਬਲ ਸਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਓਵਰਯੂਜ਼। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਹੈਂਡਲਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਸਪਰੇਇੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। I request everyone to please leave silently. There is a pitching going on, and please I request you, once everyone leave, then you start the pitching. It will just make a disturbance for you as well. Everyone please leave the hall if you want to leave with silence as there is pitching going on. Please maintain the silence and decorum in the venue. After Team Agrion, Code Mafias, get ready. नीचे आ जाऊँ अच्छा फिर ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਓਵਰਯੂਜ਼। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਥਰੂ ਹੈਂਡਲਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਸਪਰੇਇੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਰੋਨਸ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਸਪਰੇਇੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੋਇਲ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 38 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਉੱਥੇ ਸਪਰੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਰੀਓਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਸਪਰੇਇੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ AI ਮਾਡਲ ਯੋਲੋ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਪਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਥਰੂ ਐਨ ਇਨਬਿਲਟ ਕੈਮਰਾ ਜੋ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੈਮਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੁੜ ਐਰੋਸਪੇਸ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਰੋਨ ਜੋ ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੈਬ ਕੈਮ ਲੱਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੇਜ ਕੈਪਚਰ ਕਰੂਗਾ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ AI ਮਾਡਲ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਪਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗੀ 2 ਐਕਸਿਸ ਗਿੰਬਲ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੋਜ਼ਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਟ ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ ਸਰ। ਕਰੰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ
ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਲਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੀ नीचे मैम नीचे जा नीचे चलो नीचे चलो पूरी वीडियो प्ले कर ये रियल टाइम कैप्चरिंग करेगा तो सर ये कैमरा Team Veda, report on the left side of the stage. As the next pitching is yours, I repeat, Team Veda, report on the left side of the stage.
Veda. Ready? Team PTAH, team ID 161. Next pitching is yours. Be ready, okay? Hello. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, guys. Okay, so this is Team Veda. I'm going to present a product, Cyanora, which is a healthcare product, right? Now, before beginning our pitch, I would like all of you to imagine a little scenario, all right? Imagine being a patient, walking out of the hospital, feeling all relaxed, chilled, and thinking that the worst has been overcome, that you are in the best possible shape right now. Your family relaxes, you feel like it's all going to be all right for now. And for a brief moment, that reality is true. But here's the thing most people miss. The perfect healthcare which you have been receiving stops at the door of the hospital. There is no continuous improvement or there is no continuous monitoring that you actually see when you get back to your houses. And now imagine this from a macro or an Indian scale. Across India, 100 million plus patients suffer from this. 65% of rural population actually cannot really oxygen levels, blood pumping, and heart pumping fluctuations can vary and will vary because medical diagnosis does not wait to be tested and verified. It just happens and it just changes. And now I want you to imagine a real life case study of Ramesh, 64-year-old patient who was, gotten rid of the hospital, and everyone in his close circle thought that Ramesh is all good right now, everything is fine, he has been discharged from the hospital, right? But here's the thing, 2 weeks later, Ramesh's family could not afford a bus fare back. Because here's the thing, medical health is just a body, right? Situations can change, parameters can change overnight, and you have to react. And that is exactly where Cyanora comes in. Without Cyanora, this is the outcome. But with Cyanora, it's a preventable death. It's a personal life we can save. So not coming to a technical demo, because practical life works on practical demonstrations, not PPTs. हेलो तो ये तो बात थी कि प्रॉब्लम क्या है। अब हम बताएंगे कि हमने प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया है, बनाया क्या है, टेक्निकलिटी क्या थी हमने। तो बेसिकली हमारा हार्डवेयर प्रोजेक्ट है। हमने सिर्फ एक स्ट्रैप बनाया है जो आपके मसल स्ट्रेन्स, मसल क्रैम्प्स, योर हार्ट बीट एंड योर बॉडी, जितने भी बॉडी वाइटल्स हैं वो आपके उस स्ट्रैप से निकालते हैं। और मुझे वॉलंटियर के लिए सर आप अगर आ जाए तो ऊपर स्टेज पे वॉलंटियरिंग के लिए सर टेस्ट करना है सर, मसल टेस्ट के लिए इफ़ पॉसिबल। Anyone from the panel can volunteer. Ma'am for volunteer. तो अभी सर ये है क्या कि हम लोगों ने EMG इलेक्ट्रोमायोग्राम सेंसर्स एंड हार्ट रेट सेंसर्स इंटीग्रेट किए हमारे फ्रंट एंड में विद पाइपलाइन। अभी ये सेंसर्स करेंगे क्या
कि हमारे बॉडी पे एक इंटैक्ट स्ट्रैप लगा दिया जाएगा जो हमारे बॉडी के वाइटल्स को वहाँ से डिटेक्ट करेगा और हमारे डीबी में स्टोर करके बाद में हमारे फ्रंट एंड पे स्प्रेड कर देगा। वो स्प्रेड करने के बाद हमारा डाटा एनालाइज होगा एंड विल गेट अ फुली एनालाइज रिपोर्ट कि आपको क्या मसल स्ट्रेन, क्या फटीग है, कितना फटीग है, कितनी दिक्कतें हैं आपको। और सर हो गया क्या? मेक श्योर अडेप्टर उसका खराब ना हो, ठीक है। हो गया? अरे स्क्रीन शेयर नहीं है ना, पकड़ो। आगे आ जाओ, खड़े हो जाओ, रिकॉर्डिंग के ऊपर खड़े हो आप। ये स्क्रीनशॉट तो है नहीं, कोई ना, हम तू वैसे बता दे, ये बता दे। अरे भाई स्क्रीन शेयर तो दिखना तो चाहिए ना, दिखना तो चाहिए, तो उधर से क्यों निकाल रहा है तुम? निकाल के क्यों लाए? सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, वो उनके टेक्निकल पीछे वो प्रोजेक्टर में दिक्कत आ रही है, एक बार कर रहे हैं यार। स्क्रीन शेयर पे ही विजिबल होगा ना ग्राफ्स। मेक श्योर ट्रैकिंग लाइव ही रहे। ओके तो सर अभी मैं आपको लाइव वाइटल्स दिखाऊंगा जो हमने वॉलेंटियर भेजा है, उसके मसल उसके स्टार्ट सेशन। क्या कर रहे हैं? तो अब क्या हो रहा है सर, अंदर जो हमने वॉलेंटियर भेजा है, हमने उसको बोला है कि स्पेसिफिक आर्म रोटेशन कीजिए, अप एंड डाउन और राइट लेफ्ट, एनी आर्म रोटेशन। हमने अभी हमारा हार्डवेयर वायर्ड है क्योंकि हमने अभी ब्लूटूथ नहीं लगाया, इसीलिए हम रोटेशन मिनिमाइज है। बट ऊपर जो ग्राफ है वो हमारा EMG है, इलेक्ट्रोमायोग्राम, जो आपकी मसल स्ट्रेन और मसल्स के रिलेटेड इश्यूज बता रही है। और नीचे हमारा ECG आ रहा है जो हमारा हार्ट बीट्स और हार्ट रेट सेंसर से आ रहा है। स्टॉप करना सेशन, उसकी रिपोर्ट निकाल लो। ये सर हमारी डीप एनालाइज रिपोर्ट है, कितनी देर तक का सेशन चला है, हमारे पास टोटल रिकॉर्डिंग डीबी में कितनी रिकॉर्ड हुई है एक बार में। ये हमारा हार्ट रेट एनालिसिस आया है और ये हमारा मसल, रुक जाओ, ये मसल फटीक समरी हमारी। अब इसमें हमारा स्कोर लो इसलिए आया है क्योंकि उनकी मसल स्टिफ थी, उनकी मसल में स्ट्रेन ज़्यादा था। तो ये कह सकते हैं कि अगर उनके मसल में झटके लगने की संभावना ज़्यादा होगी, अगर उन्होंने कोई भारी सामान उठाया तो मसल स्टिफनेस आएगी, सोविच, जिससे उनका टिश्यू भी टियर हो सकता है ऊपर का। तो हमने AI एनालिसिस में लिख रखा है दैट मसल माइट एग्जिबिट, दिख भी नहीं रहा मेरे को, नीचे गिर दीजिए, AI एनालिसिस के बाद नीचे दिखाइए और नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए। सर ये रेकमेंडेड एक्सरसाइजेज हैं जो रिपोर्ट के बेस पे आपको बताई जाएगी कि आपने जो एनालिसिस दिया है कि क्या एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए सो दैट कि आपकी मसल्स इंटैक्ट रहें और आपका जो हार्ट रेट है वो रहे, ठीक रहे। अब सर ये ओवरऑल हेल्थ स्कोर दिया है जो मसल हेल्थ और हार्ट हेल्थ और मसल हेल्थ के ऊपर है, जो 93 दिया है बेस्ड ऑन वॉलेंटियर, उसके कितने वाइटल्स थे। अभी सर ये तो बात होगी कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है। अब हमारे इस प्लेटफॉर्म में मल्टीपल फीचर्स हैं जो आपने बहुत हेल्थ टेक में देखे होंगे, हमने वो भी इंटीग्रेट कर रखे हैं। ये एक SOS फीचर है, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए किसी पेशेंट ने वाइटल चेक किया, वो हाईली रिस्क पे था, अगर वो हाईली रिस्क पे था तो हमारा जो पाइपलाइन डेटा है वो पास के हॉस्पिटल में SOS जनरेट कर देगा इक्वली। सिंस SOS पे जाना, ये तो सर हमारे पास से क्लिनिक्स जनरेट हुए हैं। SOS पेज पे जाओ, बैक करो, SOS पेज, यहाँ से सर हमारा SOS जाएगा। बाकी अब अगर आपका क्वेश्चन होगा कि अगर आपने इतना कर दिया तो मल्टीलिंगुअल क्यों नहीं है, हर एक इंसान के लिए सेम लैंग्वेज तो हो नहीं सकती। तो मैंने
मल्टीलिंगुअल कर रखा है, लेकिन बोलने से अच्छे मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। सुभाष, कॉल आ सकती है मेरे पास? कॉल कॉल। तो सर अब हमारा होगा, जो हमारे वेबसाइट का जो एजेंट है वो हमें कॉल करेगा। वो कॉल मल्टीलिंगुअल होगी, मैं उससे जिस भाषा में बात करूंगा वो मुझसे उसी भाषा में रिस्पॉन्ड करेगा। वट एवर आई विल आस्क हिम, ही विल बी आंसरिंग मी। कितना समय लगेगा? +91 82 83 93 8550। ये सर कॉल आया अभी। हेलो हेलो, अबे हेलो, कॉल कट गया। तुम्हारे सर्वर में देखो दिक्कत क्या है भैया। तुम What is the hardware you have used? एक मिनट, What kit it is? एक मिनट। हेलो, आपकी हेल्प असिस्टेंट कैसे मदद कर सकती हूँ आज? क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज साइमोरा एंड उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सिनोरा एक हेल्थ असिस्टेंट है जो आपकी सेहत से जुड़ी मदद करता है। आप इससे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, दवाइयों की याद दिला सकता है, अपनी तकलीफ या लक्षण बता सकते हैं और आपातकालीन मदद भी मांग सकते हैं। बाकी सर आपने किट कौन सा यूज किया? आर्डिनो किट है कौन सी? यस सर, आर्डिनो एंड ESP। Arduino and ESP। ESP is used in that kit and Arduino is user Vitals kit. Okay. 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 कनेक्शंस ये इंडिकेटर्स क्या लगाए हैं? अरे इसको रहने दो, अभी के लिए रहने दो। एक अभी इसका कनेक्शन करने के लिए हमें वायर्स लगाने पड़ेंगे। What are these indicators बच्चे? सर मैं इसकी इम्प्लीकेशन बता देता हाँ, हूँ it's किस okay. चीज़ के लिए है। सर मेनली मान लीजिए एल्डर पर्सन या फिर वो पर्सन जिनके मूवमेंट नहीं हो रही, बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही, बट उनको अप्लायंसेस यूज़ करने हैं। मान लीजिए कोई एल्डर पर्सन है जो उठ नहीं सकते बेड से, बट उनको फ़ैन ऑफ ऑन या वो सब करना है, तो हमारे ग्लव में जो फीचर है, हमारे ग्लव में फिंगर पिंच होगा, तो ही कैन एक्सेस दिस अप्लायंस, तो वो हमारे पिंच से बंद हो जाएगा या चालू हो जाएगा IoT से। Yes, IoT So से। that fan also has to be Yes, IoT compatible. yes. Yeah, but that's nice. और सर एक और है कि हम लोग का अगर इसमें 3 टैप देंगे तो SOS जाएगा आपके केयर गिवर, मतलब आपके जो घर पे रहते हैं वो हमारे वेबसाइट के थ्रू हो जाएगा। बट हमने इसको इंटीग्रेट इसलिए नहीं किया क्योंकि सर ये बहुत अनस्टेबल है। जो हमारा वाइटल्स का था वो स्टेबल था। बाद में सर ये तो हमारे मल्टीलिंगुअल हो गया, हमारा RT हार्डवेयर हो गया। अब हमारे पास जो और भी फीचर्स है वो सर, ये क्या बोल रहे थे, ये सर हमारे जो लोग आप देखते हैं कि सभी लोग इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी दिखा सकते हैं? यस सर, इसकी आप, हाँ इसकी तो दिखा सकते हैं। सर एक बार आपको ये शर्ट समझना पड़ेगा। लैपटॉप सही से कर रहे हैं सर, आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा कि मेरा वायर। नॉट अ प्रॉब्लम। सर आप हाथ खोलिए। आपका मसल एक बार मेरे को देख लीजिए, पीछे करना पड़ेगा। What is this chip? That is. This is EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राम। ये मसल्स के लिए होता है। Okay. अब सर ये रहा हमारा हार्ट रेट। ये आपकी हार्ट रेट सेट करेगा। एक मिनट पूछिए। अब सर हमारा जो भी डाटा होगा, सिंपल हमारा स्टार्ट करेंगे। आप अपना हाथ मूवमेंट, हैंड मूवमेंट कीजिए सर ऐसे थोड़ा मसल से कीजिए। हाँ, ये आपके मसल फटीग का ऊपर ग्राफ अपडेट होता रहेगा। अब आपको लग रहा है वेग होगा, नीचे में आपको पेन हटाने के बाद नहीं, वो तो दिख रहा है। मैंने 0 हो गया। अरे मैंने तो क्योंकि अब इसमें बताता हूँ मैं आपको मेन दिक्कत क्या है। कंप्लीट
स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये नॉइस की वजह से भी कभी कभार पकड़ता है, तो मैंने आपको इसीलिए टाइप कर रखा है। अब ये मैं सेशन एंड करता हूँ अगर तो ये रिपोर्ट बना देंगे। Meanwhile, team PTAH, please report to the left side of the stage as you have the next performance. ये आपके ऊपर पुराने सेशंस की डिटेल है कि आपकी मसल स्टिफनेस कितनी प्रोग्रेसिवली कम हो रही है, बढ़ रही है, ताकि आपको पता लगता रहे, आप ट्रैक करते रहो कि आपके मसल और हार्ट बीट का जितना भी डेटा है और ये आपकी टोटल रिपोर्ट आ रही है। You take my number and then later you call me, okay? We'll talk about this. You have done that all these things yesterday night? Yes, sir. Whole hardware integration I've done yesterday at night. Before that, we were having our whole front end ready with us in our first mentoring session. क्वेश्चन आंसर 3 ही मिनट रखो, 5 से 10 मिनट के अंदर में खत्म। Okay. Good. We don't have much time. जस्ट सर एक बार क्लब करके दिखा देते हैं जस्ट क्लब करके चल रहा है आपको। हाँ चल रहा है, एक सेकंड आइडिया लगता है। 1 मिनट पहनियो। पावर आता है बाद में चलिए कोई बात नहीं सर। बट सर ये कौन है? एक के बाद एक कमेंट वास्ते अपना काटेगा। प्रॉपर नेक्स्ट जेएस पे बनाया सर हमने। हमारा जो डीबी यूज किया नोड जेएस और क्या डीबी सर हमारा डीबी स्कीमा दिखा देना, वो हमारा पोस्टग्रेसक्यूएल है। आपने नो नीड एपीआई फ्रेमवर्क क्या यूज किया था? एपीआई फ्रेमवर्क हमारा जितने भी हैं हम लोगों ने जो लोकल एलएलएम्स हैं वो यूज़ किए हैं। अब लोकल एलएलएम्स जैसे मैंने इसमें विजुअल आउटपुट के लिए वो हमारे पास है क्वेन 3। मेरे पास लोकल एलएलएम भी पड़े हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ अगर आपको लगे कि ठीक। जो हमारे एलएम है वो हमारे कॉलेज के सर्वर्स पे होस्ट कर रखे हैं हमने। हमारा कॉलेज लाइक हमें सर्वर प्रोवाइड करता है, उन्होंने हमें जीपी प्रोवाइड किया तो हमने वहीं होस्ट कर रखे हैं बड़े। ओके ग्रेट, वही पेज में यूज करते हैं। Sir, any feedback? Any questions? Good. Feedback. Doing good. It's going towards the side of. हाँ सर, कुछ और मैं एक चीज़ बताना रह गया सर, ये रीयूजेबल है, वॉशेबल है और लाइट वेट है। बहुत एक्यूरेसी दिस सर। Sir, actually we don't have alcohol swabs. उससे noise थोड़ी वो भी जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा। एंड इसका एक और ये है कि अंडर 5 आपने वूप के वो देखे 33,000 पर ईयर है, ये 5 इट्स फॉर द रूरल एरियाज बेसिकली, कि नॉर्मल यूज कर सकते हैं। electromyograph. और ये सर हमारा One advice is working on the healthcare system, right? Yes, sir. Accuracy should be. सर अब ये डिपेंड करता है कि हम कितना इंडस्ट्री ग्रेड के सेंसर यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ अभी बजट कम था तो हमने इतने के चल, लेकिन सर इसकी एक्यूरेसी जितना हमारा टाइटन होगा उससे इसकी एक्यूरेसी भी सर उतनी कम नहीं है। 90% एक्यूरेसी ये भी देता है बट जितना इंडस्ट्री ग्रेड हमारे सेंसर होगी उतना हमारी। थैंक यू सर। Team PTAH, if you may please proceed on the stage, and once again this is the call to team engineers to please report to the left side of the stage as you have the next pitching. Team engineers, do we have you over here? Please report to the left side of the stage. Hello. And judges, please, this is a reminder that each team for the pitching will have only 4 to 5 minutes. Once again, I'm telling that you will have maximum of 5 minutes for the pitching, and questionnaire round will only be for 2 to 3 minutes. And if you have any live demo or physical demo that you want to show, then we request kindly you may please go in person to the judges and show them over there. You may proceed. So in today's modern era of online payments,
we spend so much money online that we forget the track of money where we spent our money. So to fix that, we have brought Complyra. It is an AI powered finance compliance and risk intelligence AI which keeps a tracks of expense tracking and keeps it financially control. So the problem statement which we worked on was that uh, it was a AI based expense categorization and smart insight system. So we built a AI based system that automatically categorized transactions, for example like food bills and etc., and with the help of pattern recognition. So there are many other tools like this, but they are having very gaps in them. For example, they only categorize expenses and there was no compliance enforcement, and there were also no real-time anomaly detection, and so so in Complyra किया हाँ चल फिर बोल So, Complara is a smart finance intelligence. It has a features that turn the real data into decisions. So, first feature is the smart expense intelligence. It automatically understands your expenses and auto-categorize the transactions and track the spendings pattern and trends. Then the risk and anomaly detection. It detects the risk automatically and send us the alerts when something is suspicious. Then it follows the policy and enforcements that if someone breaks the policy, it will send us the alerts. Then AI Copilot, it is like a chatbot. It will we can ask any questions to them, and it will suggest any answers regarding. So now the part come that how it works. So basically we'll upload a transaction data which will be our bank statement, and then there will be an option to define policies like what budget and like compliance we wanna set, or if you are an organization then you already have set that, and then with the help of AI analysis patterns, then it will read all through the statement, and then it will tell us that if there are any flag risk in the system, like in the transaction, like if there is any mismatch transaction or a fraud transaction that has been done, and then it will take action immediately. So these are some features of our Complyra, that it will be having a dashboard which will tell how much money did you spend and how much money did you had. ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ hello hello. So and also it has a risk scoring system. So in that you already have the compliances, so it will just tell that what all it has, and now to the technical approach, that it has a front end, it has front end and also back end API. So yeah, and also it has AI layer and then data processing. Okay. So now the basically that which target users it does. So it does finance teams and CAs, businesses, and also individuals. So in the future scope, there is risk detection, tax optimization insights, account integrations, and personal finance assistant. So in lame language, I can say that we are working on the statements of the company and the, sorry? Nothing? Okay. So we are working on the statements of the banks and the individuals, that where are we spending the money, and if we are spending the money, are we spending the money legally, or are we spending much more money than it is required? So our
it's a website which is Complyra. It will tell us that it will tell us monthly that how much money we spend, and also it will tell us the solutions that how can we reduce our spendings so that we can optimizely use our finance, and also we can increase our so Do you have a demo? now we'll show you the live demo of that project. Demo वहाँ पे होना चाहिए वैसे ना. It cannot be showcased there. The demo cannot be showcased on that screen. इसमें कौन सा कोई कैम यूज होना? सर व्हेन वी कनेक्ट टू दैट हाँ तो वहीं पे दिखा लेते आप. तो वहाँ पे ब्लैंक हो जाता है सर, तो शो नहीं होता वहाँ. चलो. This is the front page. So like from here we can upload our statement of the bank. स्टेटमेंट अपलोड करके क्या होगा? बैंक स्टेटमेंट में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे क्यों डालूंगा? सर जैसे कि समझ लो कि आप सीए अच्छा चलो स्टेटमेंट डालने के बाद क्या होगा? What's the privacy if I upload my statement, personal data here, then how the customer is basically trust on your website? So सर जैसे कि समझ लो कि आपने एक सीए रखा है, कुछ रखा है ना, तो फिर सर समझ लो जैसे कि आपने कोई सीए रखा है या फिर आपकी एक फाइनेंस टीम है, तो फिर आप उनको मंथ एंड पे आप उनको बुलाते हो और फिर वो आपका पूरे मंथ का जितना भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो मैनुअली चेक करते हैं. तो फिर अब सर उसके अंदर उनको काफ़ी देर भी लग जाती है और काफ़ी घंटे भी लग जाते हैं. डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या हुआ? टेल मी अबाउट दैट. सर सो बेसिकली इसका काम ये है कि जैसे सीए काम करते हैं वो मैन्युअली काम करते हैं ना, और कई बारी उनको कोई एक स्टेटमेंट मैच नहीं होती, तो सर ये एक फास्ट वे है जो कि हेल्प करेगा सीएस को, ताकि वो अगर कोई उनको कोई लूप होल दिख रहा है या फिर कुछ भी उनको प्रॉब्लम दिख रही है तो वो यहाँ से वो ठीक कर पाएँ. सो एक तो ये इसका कंपनीज का काम कर रहा है सर. सेकंड इसका काम ये है कि हम इंडिविजुअली भी अपना डाल सकते हैं. जैसे सपोज करो आजकल हम पेटीएम वगैरह बहुत यूज़ कर रहे हैं, सो हमें नहीं पता लगता कि हम कब कहाँ कितना पैसा खर्च देते हैं. सो हम स्टेटमेंट्स को जब एनालाइज करेंगे तो हमें फील होगा कि हाँ कि हमने यहाँ पे इतना पैसा खर्च किया है, तो मे बी नेक्स्ट मंथ से हम. यस सर. These features already given by many platforms. Sir, but we have integrated the AI version, AI in this. So what about my privacy? What about Data privacy? privacy, yeah. So yes, well, sir, we are working on it. Like we will add the. We have already added some privacy securities in this. There is one challenge. Yes. All banks are given the statement in the different format. Sir, it's not. Then how you compile? Sorry, sir. We have different statements. You are saying. Different formats. Different formats. Yeah. Yes. ये अभी 60 to 70% complete है. ये मतलब पूरा नहीं है. We are asking that if the statements, the format is different, then how will we? How you deal with the different format? सो सर बेसिकली मतलब जो ज़्यादातर बैंक्स के मतलब जो फॉर्मेट होते हैं इसने जैसे कि एवरेज निकाला है, जैसे कि सर Right now you are just using the data from the Kaggle. Yes, sir. But if you are going in the real time, so Yes, sir. all the banks format are different. Yes, yes. Then how I you agree. compare with that? So sir, with time we can develop this. Yeah. Yes. So sir, it has all the logs and all, and also it tells you that How come this data is coming? what How come this data is coming? Sir, from The companies, Same. right? I feel the same. Suppose Because कि हमने you have not uploaded that much data. startups किया किसी ने, तो वो CA रख रहे हैं. ये UI only application है अभी. तो वो स्टार्टिंग में सर इसको यूज कर सकते हैं ताकि उनका थोड़ा सा एक्सपेंस कम हो सके. That's just a UI. And is there any models we have used? ठीक है बच्चे नहीं सर, ये मतलब अभी 60 to 70% Team, Fingeneous you can pitch, and meanwhile team
Hamtech, be ready for the next. Good morning, everyone. We are Team FinGenius, code 233. We are going to represent a tool for expenditure splitting named Splitex. Next. So the basic problem why we need this app is confusing calculations, forgotten transactions, internet required and messy settlements. ये basic problems हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा arise हो रही हैं in millennials. We can see 78% of millennials struggle with group expense management. That is why we need this tool. Meet Splitex. The main three features are one-click splitting. Expenditure को split करने के लिए ये app सबसे best और reliable है. It has a very best feature of offline wallet, and it can smart sync when we connect to the internet. Next. It has the key features like group expense tracking, smart splitting, real-time balance, and transaction history. Next. So the first differentiator we have is the offline wallet system. कोई भी ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट के अगर किसी को करनी हो, कोई ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें ये टूल सबसे ज़्यादा बेस्ट काम आता है. प्लस किसी भी इंडिविजुअल का डेटा प्रॉपर ऑथराइज्ड और सिक्योर रहता है, जिसके लिए हमने एक वॉल्ट बनाया है जो हम अभी आपको अपने टूल में दिखाएंगे. नेक्स्ट. देन वी हैव द सेकंड डिफरेंशिएटर, स्मार्ट ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन. कोई भी बिल, फिजिकल डॉक्यूमेंट, पीडीएफ इमेज को स्कैन करके हम उसको एक एडिटेबल और मैनिपुलेटिव डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं सो दैट द एक्सपेंस कैन बी एडेड एंड इट कैन बी स्प्लिट इजीली. जो हमारी टैगलाइन है स्प्लिट फास्ट एंड पे इजी, ये दो फीचर्स उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. नेक्स्ट, दिस इज द कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ द our second differentiator, the smart optical character recognition. Next. So we have our competitor Splitwise, which runs only on internet, has equal unequal splits and manual entry only. With where this SplitX has two differentiators, offline system and a recognizable character recognition. Next. These are the all text text and the architecture we have used in this tool. Next. So the current impact it can create is the work offline, reduces confusion and faster settlements. We would like to come forward to show our project. Dear judges, this is a kind request. Please stick to the timings of questionnaire, only 3 minutes. Moving ahead, the team Hamtech. Team Hamtech, please be ready. And if you want to set up the stage with all of your laptops and presentations, you can go to the left side of the stage. Please hurry up. So that वो individual अपना आराम से data हमें access कर सके. It will be a subscript tool जो हम subscription based रखेंगे so that अगर कोई भी bill as an कोई sensitive document होता है तो वो secured रहे vault के अंदर. उसे कोई भी touch नहीं कर सकता, ना admin ना individual खुद. एक बार भी उसमें चला गया. The second thing is offline payment जो कि completely free होगी. इसका highest जो subscription model होगा वो ये होगा कि offline payment कहीं भी remotely वो access कर सकता है, कोई भी group. Plus सर द थिंग इज हमारा जो आजकल अब जो यूपीआई ट्रांजैक्शन ऐप्स बन गए हैं ना, उनमें पॉलिसी आ गई है दे डोंट लेट टू बिल्ड दिस थिंग्स बिकॉज उनके लिए हमें बिजनेस वेबसाइट्स ऑथेंटिक यूआरएल्स चाहिए होते हैं कहीं भी केवाईसी से बहुत पहले, जिस वजह से हम लोग वो यूपीआई ट्रांजैक्शन एग्जिट नहीं कर पाए. दैट इज व्हाई वी बिल्ड द वॉलेट सिस्टम. यस सर, यस सर. और सर जो डेटा हम लोग ऑफलाइन वॉलेट का स्टोर्ड रखेंगे वो दैट विल बी इनक्रिप्टेड, कंप्लीटली इनक्रिप्टेड. यस सर. और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाएगा. फ्री में सिंपली आप मैनुअली ऐड करोगे, द नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन विल हैव द स्कैनेबल थिंग एंड द नेक्स्ट विल हैव द ऑफलाइन सिस्टम जो कि कंप्लीटली सिक्योर्ड होगा. कोई भी बिल आप डालोगे तो आप यहाँ पे सिक्योरली उसे एक्सेस कर सकते हो एंड इट विल बी सेव्ड विद द डेटाबेस. जो हमने टेक्स्ट टैग यूज़ करा है वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है, रिलायबल है, डेटाबेस भी डिफरेंट अच्छे से कनेक्टेड है.
सर द थिंग इज हमने मैक्सिमम चीज़ अभी डमी ही रखी हुई है। सर वॉल्ट अभी हम लोगों ने जो सर वॉल्ट क्रिएट होगा लॉगिन करने के बाद, हमें लॉगिन में भी इनपुट आती है। इसकी सबसे बड़ी चक्कर यही है ना, जब ऑफलाइन है, ऑफलाइन में हैशिंग ही नहीं हुई। नहीं सर समझे नहीं आप, साइन अप करने के बाद आपका जब तक लॉगिन अकाउंट नहीं बनेगा तब तक आप वॉल्ट को एक्सेस करने के, प्लस वॉल्ट हमने सिर्फ अब आपको दिखाने के लिए हमने अभी यूआई में डाला हुआ है। इट विल बी कम्प्लीटली बैक एंड, इंडिविजुअल को नहीं पता कि पीछे कोई वॉल्ट है। जब मैं ऑफलाइन हूँ तब ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगी? जब आप ऑफलाइन हैं, वॉलेट्स में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनके पास अलग अलग मनी होगी, वो जैसे जैसे मैंने ऑफलाइन करके इसमें ट्रांजेक्शन करी 500 रुपए की, ये सर मैं जेसन में से निकाल पा रहा हूँ, नेटवर्क इंटरसेप्ट अगर वो निकल जाएगी। सर ये अभी हमने सारा ओपन रखा हुआ है। द थिंग इज अगर हम इसको भी इनक्रिप्ट कर देंगे तो हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे अपने आप। सर बेसिक इनक्रिप्शन करते तो वो हमें एक्सेस ही नहीं करने दे रहा। द थिंग वाज दिस, हमें आपको कम्प्लीटली अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए हम सब कुछ ओपन ही रखना पड़ा। बट द थिंग इज जो सिक्योरिटी फीचर हमने वो हमने डॉक्यूमेंटेशन में कम्प्लीटली ऐड करे हैं। हम चाहे तो ऐड कर सकते थे, बट थिंग इज थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट था, प्लस जो हमें इंटीग्रेशन चाहिए थी वो अब हमें बेसिकली मिलती नहीं है। दे आर हाईली पेड। सर अभी के लिए हमने मिसिंग रखी है सो दैट आप इसको एक्सेस कर सकें सोर्स को। Thank you so much. Now we would like to call upon the team Hamtech. Team Hamtech, please report to the stage. Now moving ahead, we also have to call upon this left side of the stage, Team Dabang Coders in Open Innovation. Now it's the time for Open Innovation idea pitching. Team Dabang Coders, please report to the left side of the stage. And judges, this is once again the announcement that please kindly stick to the timings of questionnaire, only 3 minutes. And all the teams, now this is an announcement that now we will be starting the timer for 5 minutes. Please strictly adhere to the timings, and after exceeding the time limits, it may cause a decrease of your marks. Directly the questionnaire round will start. Once again, I am repeating, please stick to the 5 minutes of your idea pitching, and then the questionnaire round will start. Thank you so much. Good afternoon, sir. So our project is Earth Sathi AI, which is financial budget calculator. It focuses on AI forecasting scenarios and recommendations. The problem we solve is we don't have any app which combines expense calculator, budget manager and future forecasting. It calculate daily expenses for the budgeting of financial costs. सो बेसिकली ये जो ऐप है ये इसमें हमारे पास सारा कुछ होगा, हमारा पास्ट ट्रैक होगा जो प्रेजेंट है और हमें फ्यूचर भी बताएगा एआई की हेल्प से। सो इस ऐप के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा सर, सो फर्स्ट स्टेप पे हम लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हैं। हम लोग मैनुअली एंटर कर सकते हैं मैसेजेस को। Sorry to interrupt, we can going directly to the implementation part. So firstly we have login page. रिक्रूटमेंट्स होंगी ना, मेरे को बताना है सर, ठीक है? So this is our login page which has two interface, user and admin. Firstly we have to sign up our ID and log in the account. You can say it here, create account. लेना नहीं है क्या सर ने? Then the next page opens in which we have to add our budgets. Expenses, we can add expenses with 4 methods. One is the manual method. You can add it like you have to spend 200 on rent. You can write 200 and rent. The second is SMS parsing, like you get an email, you get an SMS from bank, 500 spent on Swiggy. It calculates Swiggy, it checks Swiggy as food, categorize
and it will automatically detect that. Then you can give voice intonation like 500 on food, it can calculate that too. You can click the picture of the bill and it will calculate the bill. Then you can see your spending breakdown in the next part. Slide कर दो यार ऊपर. ये पेन किसका था? IBM का है. मैंने खुद सिमरन मैम को बोला मैम IBM के का था पेन. What is the technology stack you have used? For front end, we use React, CSS, Tailwind. For back end, we use. What did you use for forecasting? We use API for the forecasting. Which API? Okay, no worries. Okay. What have you used for backend? MongoDB. MongoDB. ठीक है. So this is the one of the highlights of our project. We can predict the future flow. Like you have 50,000 rupees in your bank account and you are adding your expenses. So we can calculate in how many days you can get whatever you want. In 30 days you might get broke, in 60 days or not. So then we have goal forecasting. You want to buy something which is of amount 2 lakh. You will add the goal, then it will calculate the expenses you are. What's the USP of that project? Uniqueness of that project? AI insights scenarios. Which AI you are used? Which API you are used there? So for example, here we have, I have 50,000 in my account and I have entered here 50,000 and 30 days. So it will show me how much balance I have on the starting day and how much balance I have after 30 days. If I have to broke, it will tell me how much I have to increase my savings. मुझे कितनी savings बढ़ानी है अपनी. What's your team ID? Hamtech 145 ending. Judges, can we move to the next team? Okay, so I would like to call upon the bunk coders on What's the stage. the team ID? Team ID. Their team ID, Hamtech. It's 145. Now the next call is to team Hackers in open innovation. Please report to the left side of the stage. You will have the next idea pitching. And you guys are also requested to stick to the timings, 5 minutes strictly. Good afternoon, everyone. Our team name is the Bunk Coders. So let me tell you. Sorry, once again. Sir, our team name is the Bunk Coders. PPT is going to start. Just a second, sir. Team ID. Sir, 171. 171. What is the problem statement? Your problem statement? Yes, sir. Sir, we are going to present the PPT. Let me just tell you the problem first. So, sir, it's all starts from on our pain point. Sir, हमने देखा है कि हमारे खुद के
घर में जो बच्चे हैं सर हमने ये फील करा जो हमारे खुद के घर में जो बच्चे हैं सर वो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं सर। इसी को देखते हुए सर हमने एक रिसर्च करी और उसमें हमने फाउंड किया कि मोर देन 2+ आवर्स एक चाइल्ड एवरेजली फ़ोन पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है सर। उस टाइम को वो कंटिन्यूसली माइंडलेस स्क्रॉलिंग वीडियोस देख रहा है और सर वी नो कि चाइल्ड का ब्रेन एक वाइट पेपर की तरह है, उस पर हम जो राइट करेंगे वो उसके साथ फ्यूचर तक रहेगा। अगर सर हम उस वाइट पेपर पर एक ऐसी एक्टिव लर्निंग बच्चे को सिखा दें तो उसके फ्यूचर कॉन्सेप्ट इनिशियली से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सर वी आर नॉट जस्ट कवरिंग सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर ऐसा नहीं है कि लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ऐसा भी नहीं है कि एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, वो भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जहाँ लर्निंग है सर वहाँ फन नहीं है और जहाँ फन है सर वहाँ लर्निंग नहीं है। सर हमारे प्लेटफॉर्म का मेन मकसद ये है कि हम अपने यूज़र को चाइल्ड को गेमिफाइड वे में स्कूल बेस्ड कॉन्सेप्ट को मजबूत कराएंगे, स्कूल बेस्ड कॉन्सेप्ट को अच्छा कराएंगे। सर वो होगा कैसे? हम ऑगमेंटेड रियलिटी का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चा नॉट जस्ट कि वीडियो को देखेगा पैसिव लर्निंग करेगा बल्कि एक्टिव लर्निंग करेगा। सर जब हम वीडियोस को देखते हैं तो हमारी कुछ सिर्फ फिंगर टिप्स यूज़ होती हैं वीडियोस को देखने के लिए, लेकिन जब मैं एक्टिव लर्निंग कराऊंगा बच्चे से, उसकी बॉडी मूवमेंट्स कराऊंगा, उसे लर्निंग में उसके हैंड्स मूव कराऊंगा तो एक्टिव लर्निंग करेगा। सर ये सिमिलर एग्जांपल है, अगर मैं कुछ लिख के याद करता हूं तो बहुत टाइम तक मेरे साथ वो रिटेन रहेगा बजाय कि मैं सिर्फ रीड कर लूँ। सर अगर मैं चाइल्ड के कॉन्सेप्ट को, चाइल्ड की लर्निंग को एक एक्टिव लर्निंग बना दूँ, सर चाइल्ड हमारे प्लेटफॉर्म पर सर Let's go to the implementation part. ओके सर। सर दिस इज आर सर क्यूट गुगलू, इसका नाम है गुगलू और हमारे प्रोडक्ट का नाम है प्ले गुगलू। सर ये हमारे ऐप के कोर्स फीचर है हमारे साथ। Please go with the implementation part. Okay, sir. Showing there. So should we come to you? No. Sir, first of all, these are our key features. We are using the computer vision for the hand movements and eye tracking. Sir, we are not just covering the normal child, balki hum keep this slide here, then showcase the demo. Okay, sir. Sir, this is the demo of our project. You can see on the screen right now. सर फॉर एग्जाम्पल एक 4 साल के बच्चे को मैंने स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में डिफरेंस सिखाना है। सर यूजुअली बहुत बोरिंग है बच्चे के लिए। अगर मैं वो सेम चीज़ एक गेमिंग फॉर्म में लेके आ जाऊँ, बच्चे को मैंने बलून पकड़ाया स्मॉल लेटर का, बच्चा स्मॉल लेटर के बलून को कैच करेगा और कैपिटल लेटर के बलून से पॉप करेगा, तो बच्चा एक्टिवली लर्निंग करेगा और सर उसके हम पॉइंट्स दे रहे हैं उसे, जिससे बाद में वो अपने न्यू कैरेक्टर्स और न्यू फीचर्स अनलॉक कर सकता है, तो उसे डोपामाइन हिट मिलेगा। Sir, another game, sir, we are not just covering the theoretical part, but also the physical part of the child, so that कि उसकी physical health भी अच्छी रहे। सर इसे हमने gamified form में ऐसे बनाया है कि हमारा child अपनी hands, can you show the video please? सर बच्चा अपने अपर बॉडी पार्ट्स को सर अपने अपर बॉडी पार्ट्स को मूव करेगा और वो गेम प्ले करेगा और लर्निंग भी होगी सर और प्ले भी होगा। सर वन फॉर एग्जाम्पल सर फॉर प्रोडक्ट सर कि हम बच्चे को साइंस का सोलर सिस्टम सिखाना है। सर यूजली वो क्लासरूम में बहुत बोरिंग है, अगर उस सेम चीज़ को हम गेमिफाइड वे में लेकर आ जाए कि बच्चा लाइव
Meanwhile, team Hackers, you can do your stage setup. Team Defense Squad, be ready. It's a reminder, judges, please stick to the time limit as we are really short of time. ज़्यादा हो रही है ना मेरा तो काम है प्रोजेक्टर खोल के आ जाओ इधर So now it's time for Team Hackers, Team ID 231, and Defense Squad, please come on the left side of the stage. Good morning, respected judges, and to everyone present here. I am Harshika from Team Hackverse with my teammates Jashan and Mukul. And today I am going to present my project TrustMed X Watch. Let me start with a simple question first. Why is it that in an era of supercomputers and space travel, we still need to detect diseases like Alzheimer after they have already caused irreversible brain damage? And why do we need to wait for hospital visits when our body is already giving signals every single day? And another important question is, if smartwatches already collect our health data, why are doctors still not able to trust AI diagnosis? The answer lies in privacy, trust, and delay detection. And this is the problem I am here to solve today. Your team name and code. ID. Team name Hackverse and ID is 231. So let's start. Today, diseases like Alzheimer and cognitive decline are detected very late. Early symptoms are subtle, small changes in sleep, movement, or routine, and clinical tests simply fail to catch them early. So, on the other hand, AI can detect such patterns, but only if it has access to large amounts of data. And here comes the privacy paradox. Hospitals cannot share the patient's data because of laws like DP, and HIPAA. Users do not trust companies with sensitive health data. Doctors reject AI because it is just a black box, not an explainable AI. So I am with the solution, which is a explainable AI with the help of federated learning, blockchain, and hardware like IoT sensors.
TrustMed Watch is a AI-powered digital healthcare watch designed as a secure health guardian, not just a fitness tracker. Let's go to the implementation part, please. Yes. They are coming here right here. Can we have our next team? Now, the next team is Defense Squad ID 165. Team Defense Squad. एक्सप्लेनेबल एआई में आपने क्या यूज किया है? सर हमने बनाया कि अगर कोई रिस्क अलर्ट कर रहा है तो एक्सप्लेनेबल एआई में मॉडल कौन सा यूज किया है? हमने जेमिनी यूज की, एपीआई यूज करी। जेमिनी इज नॉट एक्सप्लेनेबल एआई। आपने वर्ड सारे बारी-बारी यूज किए तभी मेरे को ज्यादा लाइक लाइन यूज किया, शार्प यूज किया। क्या होता है एक्सप्लेनेबल एआई? क्या होता है? लाइक जैसे कोई भी रिस्क अलर्ट कर रहा है तो अगर अपन डॉक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड As we are running short of time, I request Team Defense Squad. सारे भारी भरकम वर्ड्स नहीं यूज करते उसमें। Yes or no? Yes. You are using. Portable mic. Hello, hello, hello. I would request all the teams, the next teams, please start with the implementation first and showcase your project to the judges. That's it. Because we are running short of time, so I request all the judges and the participants just take about 5 minutes and we'll move to the next team. A very cheerful afternoon to all the respected judges. We, the Defense Squad, are here to represent our idea named as Airlink S400. So judges, we had chosen open innovation as our problem statement. Open innovation ही क्यों? क्योंकि सर हम उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिन सब चीज़ों के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। अगर हम इस हैकाथॉन को ही रिलेट करें तो यहाँ पे हर बच्चा एआई, मेड केयर, वेब डेवलपमेंट इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा है। What about security? Let's take a real life example of this university. In this university, even every individual, even it's a teacher. सर हम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है? ये आपको दिया जाता है। You guys can go along. सर आज की डेट में लोग एआई की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, क्लाउड की बात कर रहे हैं, पर कोई डिफेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि डिफेंस भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, Meanwhile, Team Pioneer, please get ready. वैसे ही जो थ्रेड्स हैं वो भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी की नहीं बात कर रहा, तो हमने सोचा क्यों ना नेटवर्क सिक्योरिटी पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो हमारी देश की आर्मी यूज़ कर सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अपने जो ऑफिसर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में यूज़ हो सकता है, ठीक है? और जो अपने जैसे इंटेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो कंपनी इसको यूज़ कर सकती है, ठीक है? जैसे सर आप देख रहे हो कि ये मॉडर्न है, ठीक है? एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है? ओके सर, वेट।
pioneers, ready? You guys can. Now, other teams, they will be showcasing their projects directly to the judges. Yes. Team defense squad, you just have 2 minutes left. Now it's time for the next team after defense squad, team pioneers. You can go with your presentation now. Implementation.
Team AI Rebels, get ready. Now it's time for Team Pioneers. The team ID is 247. The another team, Team Rebels, be ready. Just a reminder, you have 5 minutes.
So now this is the call to team AI rebels, and next call is to team gentle warriors. Please be ready. Please approach towards the judges in front of the stage. You have the next idea pitching, and remember you have only 5 minutes to pitch. It doesn't look nice. Now this is the call to team Erigotech, if it's there. Erigotech. Team Erigotech. Team Erigotech and Team Trojan. Team Erigotech, do we have you here? And Team Trojan. Please come in front of the stage towards the judges. Both the teams, you are requested to please go towards the judges.
निकाला मैंने So guys, as we'll be proceeding towards the award felicitation ceremony, now that's very close. As you all know that TechWorks community organized this Code Crafter Hackathon 3.0 2026, and now we will move further to the award felicitation ceremony. And as per all the announcements, the prize pool is about 2.5 lakh along with 15,000 of cash, and we also have goodies that will be given to all of you to the top 15 teams which were selected. So just stay tuned and we will be announcing the results in a very short period of time. Students, those are sitting on the back side, please come forward as we are going to start with the felicitation ceremony in just few minutes. I request students, those who are sitting on the back seats, please come forward.
I would request everybody to please take your seats as it's the time for the most awaited moment. I request I would like to welcome our dedicated Vice Chairman, Mr. Harpreet Singh. Can we have a huge round of applause for him? Along with the Dynamic Registrar of CT University, Mr. Sanjay Khanduri, sir. With the Director Student Welfare, Engineer Devinder Singh. And our HOS, Dr. Arvind, sir. Can we have a huge round of applause for them? Now we have approached to the concluding moments of this wonderful event. We move towards the result announcements and the prize distribution ceremony. It's the time to celebrate the efforts, talents, and the achievements of all our participants. So now moving ahead, I would like to invite the Honorable Management of CT University on the stage for the award felicitation ceremony. Can we have a huge round of applause for them? Now first of all, we have in the series the token of gratitude first to Mr. Alok Sharma. Mr. Alok Sharma along with Mr. Raghuveer. We also have with us our dedicated guest of honor, Mr. Gaurav Madan. Moving ahead with the series of felicitation ceremony, now it's time to dedicate the award to our dedicated mentors. First we have Mr. Keshav Madan. It's Mr. Keshav Bhatt. Can we have you on the stage, please? Now moving ahead, we also have the call for the community partners without whom this event was next to impossible. First we have with us Student Innovator Society. The Student Innovator in Society. Next up, Bytewords 1.0. Can we please make it a hurry? Next up, we have Tech Drive. Then CU Updates. I request the names when announced, please be quick as we are running short of time. Can we have a huge round of applause for our community partners?
I am repeating the name of our community partners: Student Innovator Society, ByteWars 1.0, Tech Drive, CU Updates, and now it's time for the Best Community Award that goes to ByteWars 1.0. Best Community Partner. Now it's time for the award felicitation of the Hackathon Code Crafter 3.0. We first have the domain Health Tech. So we have Agreon, the team Agreon, please come forward. Then we have team Sher Coders. They also have the 10,000 coupon as they are the winners in the various domains. So give them a huge round of applause. Team Agreon. Then we have team Sher Coders. And the third team is team Code Mafia. Please come forward. And each team will be receiving the 10,000 coupon as well. Next category is Open Innovation. Now moving on with the next domain, that is the Open Innovation. We have AI Rebels. Once again with 10,000 of coupon prize. Can we have a huge round of applause for them? Then we have the team. Any guesses? Who is the winner? It's Team Hackers. Please come forward. All of the top 12 teams will be receiving the 10,000 coupons as their prize also. Moving ahead, the third team in Open Innovation is Gentle Warriors. Please come forward. Can we have a huge round of applause for them? The next category, the domain is AgriTech. The three teams who stood out in AgriTech, first we have AI Plant Doctor. Please come forward, make it a really quick.
followed by Deadline Mavericks. Please come forward. Please guys, make it a really quick as we're running short of time. First team, AI Plant Doctor, followed by Deadline Mavericks. And the third team in the domain Agri-Tech goes to Team Trojan. Please come forward for the award felicitation ceremony, and once again I am repeating, the top 12 teams will also get the 10,000 coupon prize. Moving on with the category FinTech. With the next domain, that is FinTech. We have Team Fingineers. Team Fingineers. Please, I request everyone to encourage them with a huge round of applause. Team Fingineers. Please make it really quick. Followed by Team Path.exe. Path EXE. Do we have the team Path.exe? I am repeating, do we have team Path.exe? Followed by team Hamtech. Team Hamtech. Team Hamtech, do we have you here? Okay, so now we will moving on with the winners of Codecrafter Hackathon 3.0 2026 organized at City University. Now we have the results of Codecrafter Hackathon 3.0. So the second runner-up goes to team Agrigotech with 5,000 of cash prize. Please come forward. Along with 10,000 of coupon. Please come forward. They will be awarded with the goodies as well, along with the cash prize. Then we have our first runner-up. They are the Bunk Coders with a prize money of 15,000 rupees along with the 10,000k voucher and the goodies. Again, I am repeating, the first runner-up of Codecrafter Hackathon 3.0 2026 goes to the Bunk Coder with 15,000 of cash prize along with the goodies and 10,000 coupon. Congratulations to the team. Now moving ahead with the winner
of Hackathon Code Crafter Hackathon 3.0 2026 with the cash prize of 30,000, 10,000 of coupon goodies that goes to, any guesses? The winner of Code Crafter Hackathon 3.0 is Team Sayanora AI Veda. Please come forward. Can we have a huge round of applause for them as they are the winner of Hackathon Code Crafter 3.0 with 30,000 of cash prize, 10,000 of coupon and goodies. Now I would like to invite IBM mentors to come forward. Can we have a huge round of applause for our mentors? So these were the dedicated mentors who made sure that if we needed any queries, then they were present over there. So can we have a huge round of applause for them? Now let's move forward to the pillars of core team members of TechWorks. Please come forward on the stage. Core team members of TechWorks. Can we have a huge round of applause for them? They are the guiders, advisors, and the pillars of our TechWorks community. Meanwhile, I would like to invite all the volunteers of TechWorks community who assisted for 2 days, 24 hours 7 Hackathon Code Crafter 3.0. All the volunteers who are present over here, even the participants of TechWorks community, please report to the stage.
I request all the members of TechWorks community to please come forward. Once again, I am repeating, all the TechWorks community volunteers, please come forward. The winning teams, please come forward in front of the stage. I repeat, winning teams, please come in front of the stage. As we move to the end of this memorable event, I would like to invite Dr. Arvind sir to come to deliver the vote of thanks. Good afternoon to everyone. Honorable management of the City University, respected faculty members, colleagues and dear participants. A very good afternoon to all of you. A very good afternoon to all of you. It is my privilege to propose the vote of thanks for Hackathon Code Crafter 3.0. I would like to express my sincere thanks to the management of the City University for their dedications and to conduct such events for the benefits of the society and the students. I would like to express my sincere thanks to the IBM, GDG Jalandhar and mentors also for the IBM for their judgments. Thank you very much, sir. You came here. I would like to thank special thanks to my Tech Versa team, Mr. Lakshman, Vans, Rajdeep, all other students. And if you can see, when we are talking about that any events, we have two main students for the anchoring, Miss Mannat, Miss Mehak. So thank you each and everyone. Thank you very much. Thank you everyone for being the part of this event and making it a grand success. Have a great day ahead. Before leaving, there is one announcement that all the volunteers of TechWorks community, we have your laminations that was made as your contribution towards Code Crafter Hackathon 3.0. Either you can kindly collect it after 15 minutes from B block, second floor HOS office. I repeat, after 15 minutes, B block, second floor HOS office, or you may collect it from backstage now. Also, the team Agrigon, that is the